to one and all present here. Hope you're all doing well. I, Kavya Serene, on behalf of Cerebro Kids, take immense delight in introducing the speaker for today's session, CA Devesh Khivsara, a man who has to his credit some remarkable accomplishments. A fellow member of ICAI, he has completed his Master of Commerce and is a law graduate. He has successfully completed DISA course of ICAI and is qualified as ISO 9001 lead auditor accredited to UKAF, United Kingdom. Adding to his notable accomplishments, he has cleared all 3 levels of chartered accountancy in the first attempt. He is currently practicing as a chartered accountant. Furthermore, he is a technical analyst, investor, and trainer in the Indian stock markets. Mr. Devesh will be sharing with us his useful information in the field of investments today. So fasten your seatbelts to enter into the world of investments. Over to you, sir. Thank you so much for such a kind introduction, Kavya. Welcome, sir. So we shall start, or we have to wait for the participants are joining? Sir, the participants are still joining. I think we can start and they will continue joining. Okay, no problem. So guys, basically today we would be learning some investment concepts, what we need to see in investments, which is the best asset class, how to create wealth, right? So we will try and understand few things regarding investments. So just a second, I'll share my screen with you all. Okay, you guys are able to see the screen? No, sir. Yes, sir. Okay. So basically our today's topic is investments, whether it is a luxury or a necessity. Okay. Now we all understand the difference between a luxury and a necessity. Few people think investment कब करना है? जब हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा तब हम उसे इन्वेस्ट करेंगे. अभी तो हमारे पास पैसा ही नहीं है तो हम इन्वेस्ट क्या करें, right? These all questions come to our mind. It comes each and every day कि अभी क्या इन्वेस्ट करें, अभी तो पैसा ही कम है, कितना ही मिल जाएगा इतना सा इन्वेस्ट करके, right? But we need to understand that this is not a luxury, it is a necessity. Today investments are a necessity. Why? We will learn it. Now, as we all know, India is a country of savers. That is, जो पैसा बहुत सेव करते हैं. इंडिया के लोग है ना, पैसा बहुत सेव करते हैं. हम लोग पैसा बचाते हैं, हर चीज में बचाते हैं. हम लोग जब स्कूल कॉलेज में रहते हैं, पॉकेट मनी मिलता है, उसमें पैसा बचाएंगे. फिर अगर कोई हाउसवाइफ रहती है तो उसको सपोज मंथली एक्सपेंडिचर के लिए कुछ पैसा मिलता है तो शी विल ऑल्सो सेव इट. हम भी हमारे पैसे सेव करते हैं. But whether just saving is enough, okay? We should make India the country of people doing investments and not just saving. Now, what is the basic difference between savings and investment? Savings में हम क्या करते हैं ना, हम कुछ पैसा है उसको बचा के साइड में रख दिया हमने. Say today we saved some 2,000 rupees or saved some 10,000 rupees और उसको हमने हमारे कबर्ड में, हमारे ड्रॉअर में रख दिया. ठीक है कि कुछ दिनों बाद कभी जरूरत पड़ेगी तो ये पैसा काम आएगा. This is saving. What is investment? In investment, we make this money work for us to generate more money. Like पैसे से हम और पैसा कमा सकते हैं. This is investment. So we should make India the country of people doing investments, right? Now basically why investment? Saving भी किया तो क्या ना, आज 1 लाख रुपए डाला हमारे पास, जब भी चाहिए हमारे पास 1 लाख रुपया रहेगा. This is saving. So why one should invest? Okay, you will have something on your screen now.
Now this is the fact. Okay. The first thing is inflation, महंगाई का दर. Okay. Now, as per the RBI data, the wholesale price index inflation, WPI inflation, has grown in India by 6.5% in the last 30 years. मतलब हर साल on an average 6.5% सारी चीजें महंगी हो जाती है. ठीक है. Now suppose in 1990 someone had saved rupees 1 lakh और वो 1 लाख रुपए उसने सेव कर दिया और सेव करने के बाद यानी उसको कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं किया, अपने अलमारी में, अपने ड्रॉअर में, अपने कबर्ड में रख दिया, एंड देन ही डिड नथिंग विद इट. नाउ व्हाट विल बी द कंडीशन टुडे? द कंडीशन टुडे वुड बी, वो पैसा तो 1 लाख ही रहेगा. अगर 1 लाख रखा है तो वो 1 लाख ही रहने वाला है, पैसा ना कम होगा ना ज्यादा होगा. बट द प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन, the purchasing power of that 1 lakh rupees is now only worth 11,300. Now what does this mean? Say पेट्रोल है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल रोज लगता है हमको, कहीं भी हम आएंगे जाएंगे, वी नीड पेट्रोल डीजल. ओके. इन 1990 the price of petrol was say 10 rupees a liter. Okay. Now up to 2020, that is 30 years, it was 80 rupees and now we all know it is touching around 100 rupees. अभी 100 रुपए है पेट्रोल. So as you can see, अगर 1990 में मेरे पास 1 लाख रुपए होते तो मैं 10 रुपीज के हिसाब से पेट्रोल परचेस करता, करेक्ट. लेकिन अब क्या होगा? अभी भी मेरे पास 1 लाख रुपए ही है 2020 में भी, बट नाउ I can purchase petrol worth 100 rupees. So क्या हो गया? The prices of the petrol increase 10 times, right? तो मेरा जो purchasing power है वो reduce हो गया. यही 1 लाख रुपए से जो मैं हो सकता है 10,000 लीटर पेट्रोल खरीद सकता था, अब मैं सिर्फ 1,000 लीटर ही पेट्रोल खरीद सकता हूँ. Okay, so this is purchasing power and this is the inflation. It is the biggest hurdle in your financial goals achievement. ये सबसे बड़ा हर्डल होता है इन्फ्लेशन. महंगाई से क्या होता है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो महंगे होते जाते हैं और फिर अगर हम हमारा जो मनी है उसको प्रॉपरली इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो वो 1 लाख रुपए भी अगर है तो दिखेंगे वो 1 लाख, लेकिन उसका वैल्यू आज बहुत कम हो जाएगा. सिमिलरली आप देख सकते हैं मिल्क के रेट से. 1990 में मिल्क 6 रुपए लीटर हुआ करता था, आज 50 से 60 रुपए लीटर हो चुका है. Similarly, you have petrol, you have diesel and various other things. आप कोई भी चीज का दाम देख सकते हैं, that is always ever increasing. So actual inflation rates you can see here. Okay. Now this is 7%. There are two types of inflation. Okay. One is WPI and another is CPI, that is consumer price index. This is wholesale price and another is consumer price index. Consumer price index का मतलब होता है वो रेट जिस रेट पे एक्चुअल कंज्यूमर चीजों को परचेज करता है, एंड दिस इज द होलसेल इंडेक्स. होलसेल इंडेक्स इज 6.5% and consumer price index is somewhere between 7 to 8% per annum. It is increasing at the rate of, say, we can say for simple purpose it is 7% per annum. So to beat inflation we need to invest our money very wisely. हमें इतना रिटर्न्स तो कमाना ही है जो इन्फ्लेशन को बीट करे, राइट. ये मैंने अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते, राइट, ये मैंने अभी इन्वेस्ट नहीं किया था तो परचेसिंग पावर कम हो गया, लेकिन ये अगर 1 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किए होते ऐसे इंस्ट्रूमेंट में जिसने मुझे 7% से ज्यादा रिटर्न्स दिए होते, राइट. वी हैड इन्वेस्टेड 1 लाख in such a way that it would have generated returns of say more than 7% per annum. तो क्या होता है? तो ये 1 लाख रुपए भी बढ़ गए होते. से रिटर्न हमको मिला 10%. फॉर एग्जाम्पल द रिटर्न वॉज 10% पर एनम. तो ये 1 लाख रुपए हर साल 10% से इंक्रीज होते जाते हैं और ये पैसा भी इंक्रीज हो जाता है. यहाँ पे महंगाई भी बढ़ी और हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ा. गाइस प्लीज इफ यू कैन म्यूट योरसेल्फ. राइट. सो वी हैड 1 लाख रुपीज. 1 लाख रुपीज से क्या हो गया? इसका तो वैल्यू कम होते गया, लेकिन अगर हमने इन्वेस्ट किया है तो 1 लाख भी इंक्रीज हो जाएंगे और यहाँ पे हमारे प्राइसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं. लेकिन
what's the difference? The prices are increasing at the rate of say 7% and we are earning at the rate of 10%. तो हमारा real growth is 3%. real income क्या हो रही है अपनी? Real income is और real return is around 3% की 3% के आसपास हम लोग extra earn कर रहे हैं on inflation. So this is the most important thing. You have to select the asset class, such an asset class that will generate returns more than the inflation rate. If you are not earning more than the inflation rate, then you are not earning at all, you are losing. आपका purchasing power कम हो रहा है, आपके पैसे की वैल्यू कम होते जा रही है. So this is the most important thing कि investment क्यों एक necessity है. It's not just luxury कि बहुत सारा पैसा है तो आप invest करें. It's not like that. You have to do investment in order to increase your purchasing power, right? As you can see, household expenses are also rising. 2010 में 15-20 हजार रुपए में घर चलता था. आज अगर आपको एक normal lifestyle बिताना है तो you should have around 30 to 35,000 a month as household expenses, right? Not very lavish and like एक अच्छी खुशहाल जिंदगी जिसे हम कह सके. तो अगर इन्फ्लेशन रेट हम यही 7-8% अगर मानते हैं तो व्हाट विल हैपन ना 2030 के आसपास तक वो खर्चा हो जाएगा 75,000 अ मंथ. हायर एजुकेशन, ये जो फीस दिख रही है आपको ये एक्चुअल फीस है IIM अहमदाबाद की. 2010 में इट वाज अराउंड सम 6 लाख रुपीस. 2020 इट इज नाउ 23 लाख रुपीस. 2030 ऐसे इन्फ्लेशन चलते रहा अगर एजुकेशन में तो इट वुड बी अराउंड 50 लाख रुपीस. सिमिलरली द मैरिज कॉस्ट. तो इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है ना, हमारा हर खर्चा बढ़ता है. अब अगर हर खर्चा बढ़ते जाएगा तो आपके जो एस्पिरेशंस है वो फुलफिल नहीं होंगे. आपकी जो सैलरी है, आपकी जो रेगुलर इनकम है, वो सिर्फ आप एक रूटीन लाइफ, मतलब आपका जो रूटीन है बस उसी में आपका पूरा पैसा खर्च हो जाएगा अगर आप उसे प्रॉपरली इन्वेस्ट नहीं करते. अगर आप इन्वेस्ट करते हैं देन यू कैन क्रिएट वेल्थ फॉर योरसेल्फ. कैसे करना है हम लोग आगे धीरे धीरे देखेंगे सब चीज. बट आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन. बेसिकली हमें इन्फ्लेशन से ज्यादा क्यों कमाना है, समझ में आया? यू गाइस Sir, what is inflation, sir? What is inflation? Can you tell me about it? What is inflation? Okay, inflation is, see, say we come to back to the previous slide. Just a second. Very simple thing. See, in 1990, say milk was 6 rupees a liter or petrol was 10 rupees a liter. Now every year the prices of the commodities goes on increasing. Now that is inflation. In Hindi we call it महंगाई का दर. महंगाई बढ़ती है, ठीक है? So in English the महंगाई दर is inflation. Every year the prices of the commodities are increasing. In India, in the past 30 years, the wholesale price index or the wholesale inflation rate is 6.5% and the retail inflation rate is somewhere around 7 to 8%. That is CPI. We call it as consumer price index. So every year the prices of commodities are going to increase and it is getting increased. Like petrol from 10, it is now 100 rupees. Diesel from 4, it is now 90 rupees, right? Milk from 6, now it is 60 rupees. So every year the prices of the commodities are increasing. Day by day they are increasing. So what you can do is you can invest in such a way that you earn money on your investment more than the inflation rate. Now if you earn more than the inflation rate, then only you are really earning. If you are earning less than the inflation rate, in fact you are not earning, you are losing your money. Okay, so this is inflation. So what is the right way now? Okay, now this is very simple, smart and time tested formula. You should start early. You should start investing at a very early age. Plus you should invest in right asset class. There are different asset class, we will discuss about it, but you should choose the right asset class depending on your financial goal, right? And you should save it regularly. So this is the way to achieve your goal. There is no shortcut to this. Okay, you have to do this in a right way to achieve all your financial goals. Okay, see, investing is like life. There is no shortcut. Of course there is no shortcut. Investing is a simple thing to do. We people complicate it. You should have your asset allocation in place. You should choose the perfect asset.
है ना. You should decide your investment income and you should just keep on investing. You should not think about various other factors. You should just continue on investing it. That's how you can create wealth. Okay, here investment is to create wealth. You don't want to make money using investment. Now what is the difference between making money and creating wealth? Say, if you are, say, doing a business or you are trading, what you are doing, you are making money in trading business or in any your profession. You are making money to earn a living out of it, right? But using investment products, what you should your aim should be to create wealth for yourself, for your family, for your loved ones, for your generations to come. You should create wealth. You should not only just make money. सिर्फ घर चलाने के लिए पैसा नहीं चाहिए, हमें घर बनाने के लिए भी पैसा बनाना है, right? So you should not just only make money, you should create wealth. Now how to do it? See, there are various financial goals. Your each and every investment should be linked to a financial goal. And unless you achieve your financial goal, you should not exit from your investment. Okay? So your every investment should be linked to your financial goal. Financial goal, there can be many financial goals. Say education, it can be one financial goal. Another financial goal could be you want a new home, right? You want a brand new car or any other asset. You want say gaming pad, you want a laptop, anything what you want. Say that could be your financial goal. You want to say you after 5 years you are planning for a say foreign trip. After 10 years you are planning for a world tour. Okay, so these are different financial goals. Say marriage could be a financial goal. Another most important financial goal is retirement, right? After retirement, up till retirement you are earning money, but after retirement you will stop earning money. So you should have enough corpus at the time of retirement that you can lead retirement life happily. So these can be different financial goals. There can be many other financial goals. So your each and every investment should be linked to a financial goal, and that will help you to achieve your financial goals. Now to achieve these goals, क्या investment options हो सकते हैं हमारे पास? What are the investment options? You can invest in bonds. Bonds may include say fixed deposits है, बैंक में fixed deposit आप कर सकते हैं. You can purchase various types of bonds. You can purchase some debt instruments from say there are various mutual funds, right? Debt mutual funds. From there you can do it. Another option is equity, right? You can become part owner of the business by purchasing equity. Then you have another option is to invest in gold or silver and such precious metals कि उनका जब प्राइस बढ़ेगा तो आपका इनकम होगा, आपका वेल्थ जनरेट होगा. फोर्थ इज रियल स्टेट. यू कैन इन्वेस्ट इन रियल स्टेट, है ना, आप प्रॉपर्टीज परचेज कर सकते हैं. सो दैट इज वन मोर एवेन्यू वेयर यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग. नाउ इन सभी का इम्पोर्टेंस अलग अलग है. इसमें से ऐसा नहीं है कि कोई एसेट क्लास बहुत अच्छा है और कोई एसेट क्लास बहुत ज्यादा खराब है. वन एसेट क्लास इज गुड एंड अनदर एसेट क्लास इज वेरी बैड. इट्स नथिंग लाइक दैट. बट द थिंग इज कि everything has its own pros and cons. Now, if we come to the bonds or the fixed deposits or debt instruments, like giving fixed returns, right? So as you know, today the FD rates are around 5% or 6%. Previously they were 8 to 9%, right? So on an average, they have fixed income. Equity, it has a very high return, but there many people are afraid because they feel they have very high risk in it, right? कि equity में the people they are fearful कि equity में बहुत ज़्यादा risk है, हमारा पैसा जीरो भी हो सकता है. डेफिनेटली आप अच्छी कंपनी में नहीं डालोगे तो जीरो भी हो सकता है. लेकिन जस्ट थिंक अबाउट इट. हु आर द रिचेस्ट पर्सन्स इन इंडिया? इंडिया में सबसे ज्यादा रिचेस्ट पीपल हु आर देयर? यू कैन से यू हैव मुकेश अंबानी, then you can have Azim Premji, you can have Ratan Tata, Kumar Mangalam Birla. These are the names we know who are very rich. Now why they are rich? They are rich because of the equity only.
उनके कंपनीज में शेयर होल्डिंग है, और उन शेयर होल्डिंग के वजह से उनके शेयर का जब वैल्यूएशन बढ़ता है तभी उनकी नेटवर्थ बढ़ती है, तभी उनका वेल्थ बढ़ता है। कि मुकेश अंबानी की वेल्थ से फ्यू मिलियन डॉलर्स या ऐसा कोई नेटवर्थ है, ही इज अ बिलियनर, सो से फ्यू बिलियन डॉलर्स इज द नेटवर्थ ऑफ मुकेश अंबानी और गौतम अडानी और से अजीम भाई प्रेम जी, और यू कैन हैव एनी नारायण मूर्ति or the Infosys family, right? So इनके पास में why the net worth there is so high? Because of the equity. Now equity का nature है ना, आप what you are doing, you are investing in a business. If a business earns, if a business is in profit, it will be reflected in the share price of that business. Say Reliance Industries at say कुछ years पहले the profit of Reliance Industries was some 100 crores. Now it is in thousands of crores, right? So you can check of any company. HDFC Bank, it was of say 250 crores, now it's 2500 crores and more, right? They are in the increasing trend always, and that is reflected in the share price of that company. So the Reliance share was trading somewhere around say 100 to 100 rupees. Now it is trading at 20 to 100 rupees. So this is reflecting in their share prices. So they are earning equity, and we are afraid to invest in equity. Yes, somebody has some question? Yes, sir. Yes, you can ask. So I have the question like when a IPO is declared, so the company sells all its shares for say 20% of the stakes in the stock market. Then suppose like you give the example of Reliance that share was sold at rupees 100. Okay. Okay, now people who are trading on it, they will like sell or buy the shares among themselves. So Correct. Reliance is not getting any benefit out of it if the price goes up or down, because they have Yes. already collected the stockholders' equity. So why, no, matlab, how is that Reliance is going to benefit? And if it is not going to benefit, then why it is giving dividends? Okay. See, the total shareholding, say if we consider, is 100%. Okay. Now in the IPO, what happens is they they sell few shares or they sell some extra shares out of the authorized share capital. There are two types of share capital. One is authorized share capital and another is subscribed and paid up share capital. Okay. So once they have said they have 100 shares, out of that 100 shares, the Ambani family or the promoters, we call it as promoters, who were the they can be anyone, जो भी promoter थे उस company के, right? The promoters say the stake of the promoter is 60%. The stake of the other investors are 40%. Okay, they can be retail investors, they can be high net worth investor, it could be foreign investors, domestic institutional investors, can be anyone. So 40% is others and 60% is promoters. Now this is the ownership only. Like we have two partners. In simple logic, you can understand there are two partners. One partner is holding 40%, another partner is holding 60%. Now, Yes. Reliance is doing business, right? Every year they are doing some business and they are earning some money. Now, suppose they have 100 rupees in the year, they have 100 rupees. Now, what they can do is they will keep some money for their future expansion. Like out of 100 rupees, they keep 90 rupees as reserves for their future expansion. And what they can do is they can give 10 rupees as dividend. Now 10 rupees as dividend is distributed among all the shareholders. The 60 out of that 10 rupees, 6 rupees is given to the promoters because they have 60% holding, and 4 rupees is given to the other people, they have 40% holding. So this is how dividend is basically distributed. Now what is the benefit of Reliance? See, the company in itself has already earned 100 rupees profit. The benefit is of the shareholders of the company. There is no benefit of a business as such anywhere. Business में benefit होता ही नहीं है ना. आप अगर कोई business कर रहे हो तो benefit आपको होगा, right? तो Reliance को company को क्या benefit होना है? The benefit is to the shareholders of that company. If the company does good, कंपनी अगर अच्छा करेगी तो क्या होगा ना, कंपनी का इनकम बढ़ते जाएगा. शेयर तो उतना ही है मार्केट में,
There are total 100 shares, and the Yes, profit sir. accumulating and accumulating and accumulating. So what will happen? The actual price of that shares will get on increasing. It will go on increasing, right? It's as simple as that. If a company is earning continuous profits, it is reflected in the share prices. The price of that share will increase क्योंकि number of shares तो उतना ही है और profit बढ़ते जा रहा है. Okay, and at the market the people are trading it at some premium. You can say there are two different share prices, one is book value and one is market value. The book value is calculated as per their books of accounts कि उनके books of accounts के हिसाब से उसका share का value कितना आ रहा है, and market value may be different. Market value may be less than book value, equal to book value, or more than book value. Now in good companies the market value is always higher than the book value. The reason is people invest in anticipation of future. People, जो लोग है ना वो भविष्य को ध्यान में रख के इन्वेस्ट करते हैं हमेशा. So if you see the probability कि share increase, it may increase further in Reliance, or the business of Reliance is increasing. What you will do? You will buy the share of Reliance today, and then as you have already decided कि उसका share price तो बढ़ने ही वाला है, तो जब share price उसका बढ़ जाएगा, say in 2 years, 3 years, 5 years, anytime, then you can exit. Now this is investing. You have booked your profit and you have sold your shareholding to someone else. Say you have bought a share at 2000, you have sold at 2800, and the other person has now acquired that share at 2800. Now his cost is 2800, and by that time Reliance is accumulating profits. They are generating profits every year through using their business, and they are just generating their profit. So few companies don't declare dividend at all. Few companies declare very low dividends. Few companies declare very high dividends. Now it depends on the company and their shareholders that they can decide how much declare they want to, how much dividend they want to declare. Now the 100 rupees profit is the profit of the whole company. Now everyone using a majority, they decide कि हमको इसमें से कितना डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट करना है और कितना हमको हमारे फ्यूचर ग्रोथ के लिए रिजर्व्स में रखना है. तो इससे क्या होता है ना, कंपनी का कैपिटल बढ़ते जाता है, एंड जब कंपनी का कैपिटल कॉर्पस बढ़ते जाता है देन इट इज रिफ्लेक्टेड इन दी शेयर प्राइस, और उसके शेयर प्राइसेस इंक्रीज होते जाते हैं. ओके, सो दिस इज इक्विटी, नथिंग लाइक इट, राइट. रिस्क है तो उसमें रिटर्न भी बहुत ज्यादा है. बॉन्ड्स और एफडी में रिस्क लो है, बहुत लो है, तो रिटर्न्स भी लो है. गोल्ड, सिल्वर एंड रियल एस्टेट में यू हैव मॉडरेट रिस्क एंड मॉडरेट रिटर्न. गोल्ड सिल्वर में भी प्राइस कम ज्यादा होने का रिस्क हो सकता है. सिमिलरली रियल एस्टेट में हो सकता है. रियल एस्टेट में बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं कि आपके प्रॉपर्टी का लोकेशन कैसा है, और बाकी कुछ लीगल डिफरेंसेस है, लीगल पॉइंट्स भी आ सकते हैं. कभी कोई प्रॉपर्टी एक्वायर हो जाती है, या है ना किसी प्रॉपर्टी में से हाईवे बन जाता है तो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है. So there can be many different things, but broadly speaking, you only have these things in which you can invest, right? Real estate में invest करने के लिए definitely आपको एक lump sum बड़ा amount चाहिए, otherwise you cannot purchase a real estate in, say you have 5,000 rupees, so you cannot purchase a real estate in it, right? But you can invest in other instruments. Now, which is the best asset class then? We would be unboxing various things today. कि बेस्ट एसेट क्लास कौन सा है, उसको कैसे हम कर सकते हैं, हाउ वी कैन डिसाइड, राइट. नाउ दिस इज जस्ट कंपैरिजन ऑफ रिटर्न्स. से गोल्ड, ओके, इन 1981, दिस इज जस्ट आई वाज इन्फॉर्म्ड दैट वी विल हैव वेरियस कॉलेज स्टूडेंट्स. आई हैव जस्ट कंपेयर्ड कि हमारा जो एवरेज एज होगा अटेंडेंस का, दैट वुड बी अराउंड 20 years of age. So you have say 40 years till you retire. Okay, we will considering the retirement age as 60. So हमने 40 years का जस्ट एक कंपैरिजन बनाया है मैंने, जिससे आपको एक व्यू मिल सके. से गोल्ड है, इन 1981 गोल्ड वाज 1800 रुपीज पर 10 ग्राम. ठीक है, हिंदी में बोलूँ तो 1800 रुपए तोला सोना था. ठीक है, 1800 पर 10 ग्राम. नाउ it is 50,715. okay, these are the rates of just last week, say you can say. So it is 50,715 per 10 gram. Okay, 50,000 रुपए तोला हो गया. The compounded annual growth rate of it is 8.7%. Okay, तो अगर आपने 1981 में एक तोला सोना 1800 रुपए में खरीदा होता
और अभी आज आप उसको 50,715 रुपए में बेचते, तो यू वुड हैव अर्न a compounded annual growth rate of 8.7%. That is, in simple terms, if you have invested 1 lakh rupees in 1981, today the value of which would be 28 lakh 17,500 approximately. Okay. Similarly, if we can check for the real estate, say real estate का common pricing नहीं होता है, ठीक है, सब जगह price अलग अलग है, तो we couldn't find any common factor, right? बट इन जनरल से 1981 में कोई प्रॉपर्टी 200 रुपए स्क्वायर फीट थी, any property trading at 200 rupees per square feet. Now the rate is around 20,000 or 22,000. It can be more or less. Okay, there is no common factor in real estate basically. So say if it is 20,000 per square feet, okay, and I'm going थोड़ा सा high end पे चले गया मैं कि 100 into 100 हो गई property के rates, that is 200 के 20,000 हो गए per square feet. Then also the CAGR is 12.2%. Every year you have earned 12.20% returns. That is, आपने 1 लाख रुपए अगर 1981 में रियल स्टेट में इन्वेस्ट किए होते तो आज आपको अप्रोक्सीमेटली उसका वैल्यू होता 1 करोड़ रुपीस. ओके, एफडी एंड बॉन्ड्स का अभी रेट तो बहुत कम है, बट 40 इयर्स का हम एवरेज सीएजीआर देखें तो अराउंड 8% होता है फिक्स डिपॉजिट जो बैंक में थी, कि उसका अलग अलग रेट होते हैं, हर साल आरबीआई उसे कम ज्यादा करते रहती है. तो एवरेज रेट वाज फाउंड इन द लास्ट 40 years, the average rate is 8% per annum. So with this you would have when you have invested 1 lakh in 81, you would have made 21 lakh 72,500 rupees. इक्विटी से सेंसेक्स ले लेते हैं हम, दैट इज द एवरेज ऑफ 30 बेस्ट कंपनीज इन इंडिया. ओके, 1981 में सेंसेक्स वाज 173 पॉइंट्स. In 1981 the Sensex got listed in say somewhere around 1979. 100 पे लिस्ट हुआ था, सेंसेक्स 100 से स्टार्ट हुआ था. हम 1981 से सब डेटा ले रहे हैं तो हमने 81 से डेटा लिया है पूरा. तो in 1981 the Sensex was 173 points. Now in 2021 it's around 51,850. Now this has given a CAGR of 15.32%. Now if you had invested 1 lakh in 1981, the value of this would be around 3 crores. Okay, so this is the difference, and these are the actual CAGR returns of different asset classes. Okay, now अब इसमें से सर आपको यानी you will feel कि सर this is the best asset class, so we should always invest in this. It's not like that. Say for example, एक फादर है और उसकी डॉटर का 6 months के बाद में मैरिज है. आफ्टर 6 months there is a marriage of her daughter. So what do you think, where should the father invest? Sir, FDs or gold? FDs or gold. Okay, gold also is not preferred for such a short period because हो सकता है gold का रेट भी बहुत कम हो सकता है ना 6 महीने में. So the best thing is you can invest in fixed रिटर्न प्रोडक्ट, जहाँ पे आपको फिक्स रिटर्न मिल रहा है, जहाँ पे आपको बैंक लिख के दे रहा है, जहाँ पे आपको लोएस्ट रिस्क है, वहां पे आप इन्वेस्ट करेंगे. से इन एफडीज यू इन्वेस्टेड, एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, नाउ इफ आई से you are 20 years of age and you are planning for your retirement which is 40 years from now. Now where you will invest? Equity. Okay, you will try and invest in such an asset class that will give you more returns. Definitely. See, एकदम सिंपल सा लॉजिक है. अगर आपको आपके मम्मी ने बोला घर पे कि जाके सब्जी लेके आओ सब्जी के बाजार से, ठीक है, एंड दी सब्जी मार्केट और दी वेजिटेबल मार्केट इज जस्ट आपके घर के पास ही है, ठीक है, तो यू कैन ऑल्सो, आप पैदल भी जा सकते हो, यू कैन गो ऑन योर बाइसिकल ऑल्सो, राइट. यही अगर मैं बोलूँ आपको कोई सामान आपको आपसे, यू आर स्टेइंग एट से न्यू दिल्ली, और मैं आपको बोलूँ कि आपको मुंबई से लेके आना है, देन पैदल जाने वाला और साइकिल वाला रास्ता खत्म हो गया ना. नाउ यू कैन गो बाय रोड, यू कैन गो बाय रेल और यू कैन गो बाय एयर. लेकिन यही मैं आपको बोलूँ कि आपको वो सामान लंदन से लेके आना है, देन देयर इज नो अदर ऑप्शन देन एयर, राइट. इसका मतलब क्या होता है, जितना ज्यादा आपको ट्रैवल करना है आपका व्हीकल उतना फास्ट होना चाहिए, फर्स्ट थिंग.
मतलब आपको आपका जो फाइनेंशियल गोल है वो जितना दूर है, आपका व्हीकल उतना फास्ट होना चाहिए। मीन्स आपका व्हीकल इतना फास्ट होना चाहिए जो आपको मैक्सिमम रिटर्न दे सके, तभी आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। अगर आपका से रिटायरमेंट 40 साल बाद है तो आप एफडी में पैसा नहीं रखोगे, और रखना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? इट इज गिविंग वेरी लेस रिटर्न, फर्स्ट थिंग, और आपके पास में अभी बहुत टाइम है। यू कैन अफोर्ड अ बिट ऑफ रिस्क, दिस इज द लोएस्ट रिस्क, एफडी एंड बॉन्ड्स आर द लोएस्ट रिस्क, सो यू कैन अफोर्ड रिस्क। तो आप क्या कर सकते हैं ना, आप हो सकता है कुछ पैसा आप कोई प्रॉपर्टी लेके रख ले, कुछ पैसा आप इक्विटी में डाल दे, राइट। यू कैन अलोकेट योर मनी इन डिफरेंट एसेट क्लासेस। हो सकता है कुछ का आप गोल्ड भी ले ले फॉर सेफ्टी पर्पजेस, ठीक है। जनरली देयर इज इनवर्स रिलेशन सीन इन इक्विटी एंड गोल्ड, तो आप हो सकता है गोल्ड भी ले सकते हैं कि इक्विटी में अगर कभी नेगेटिव रिटर्न्स आते हैं तो गोल्ड हमारे पोर्टफोलियो को थोड़ा सा सेफ गार्ड कर देता है। तो हम ऐसा कुछ बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं, बट बेसिकली व्हाट आई वांट टू से इज कि जितना गोल, फाइनेंशियल गोल आपका दूर है, आपको एसेट ऐसा चूज करना है जो फास्ट ट्रैवल कर सके, राइट। So this is basically the comparison of returns. Now we will calculate real returns. Okay, and I am ignoring taxes here. Now real return मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हमको इतना अर्न करना है कि हमें इन्फ्लेशन को बीट करना है। ये तो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। हम इन्फ्लेशन ही अगर बीट नहीं कर पाए तो देन वी आर नॉट अर्निंग एट ऑल, राइट। सी गोल्ड का हमने लास्ट स्लाइड से CAGR कैरी फॉरवर्ड किया है, वी हैव जस्ट अज्यूम्ड द इंटरेस्ट रेट एट 7%. इट वाज 7.25, इट इज एवरेजली इट 7.2, बट ठीक है, फॉर कैलकुलेशन सिंपल पर्पस वी हैव 7% इन्फ्लेशन रेट. सो these are the real returns that we earned. Approximately we have earned these real returns. Okay, in gold you have earned 1.6, real estate say 4.9, 1% in FD, and in equity say approx you have earned 7.8%. Now these are the real returns. Here please note, here we have ignored taxes. अगर आप इसमें टैक्स को इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आप जैसे आपने FD करी, FD पे आपको 8% इंटरेस्ट मिला, तो वो इंटरेस्ट पे टैक्स भी लगेगा ना। तो टैक्स मिलने के बाद तो ये और कम हो गया। से आप फॉर एग्जांपल 20% टैक्स ब्रैकेट में, मैं ना 10 ले रहा हूँ ना 5 ले रहा हूँ ना 30 ले रहा हूँ, मैं क्या एवरेज लेता हूँ, से यू आर इन द टैक्स ब्रैकेट ऑफ 20%, आपको 20% टैक्स लगता है। सो 8 में से 20% तो टैक्स में चले जाएगा, तो 8 का 20% हो गया 1.6, तो इसमें से 1.6 तो गया, अब बचा कितना, कितना बचेगा 6.4, right? तो you have earned the 6.4% return and inflation is 7%. तो आपको तो नुकसान हो गया है, ठीक है, मेरे हिसाब से आपको नुकसान हो गया है क्योंकि आपने सिर्फ 6.4 अर्न किया है and then you have lost 7%. Okay, but this is just not the only criteria. As I told कि आपको ये भी देखना है कि आपको आपका फाइनेंशियल गोल कितना पास है। अगर आपका फाइनेंशियल गोल बहुत ज्यादा पास है तो यू वांट अ वेरी सेफ इंस्ट्रूमेंट, राइट। ऐसा तो नहीं करेंगे ना हम कि हमने बेटी की शादी 6 महीने बाद है या 5 महीने बाद है और हमने इक्विटी में इन्वेस्ट कर दिया है और मार्केट थोड़ा सा करेक्ट हो गया या क्रैश हो गया थोड़ी देर के लिए, ठीक है, तो हम ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना बेटे को कि अब तेरी शादी यार अगले साल करेंगे, अभी मार्केट क्रैश हो गया है तो अब अगले साल शादी करेंगे जब मार्केट ऊपर आ जाएगा। तो दिस वी कैन नॉट डू इट, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। तो एट सच टाइम्स वी नीड फिक्स्ड इंटरेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स ऑल्सो, मतलब ये भी जरूरी है, ठीक है। डोंट गेट मी रॉन्ग कि एकदम फालतू है और इसकी कोई जरूरत नहीं है, दिस इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी, बट फॉर क्रिएटिंग वेल्थ द बेस्ट ऑप्शन आई फील इज इक्विटी, and the second option you can go for real estate. Real estate you can go, but for that you should initially have a big capital. अगर आपके पास में बड़ा पैसा है तो आप रियल एस्टेट में जा सकते हैं, एटलीस्ट आपको 10, 15, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख इतना तो चाहिए ना रियल एस्टेट में कुछ अच्छी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। बट यूजिंग इक्विटी यू कैन इन्वेस्ट, स्टार्ट विद एनी अमाउंट, ओके, यू कैन स्टार्ट विद एनी अमाउंट। सो वेल्थ क्रिएट करने के लिए, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने के लिए द बेस्ट एसेट क्लास आई फील इज equity. There's nothing better than that. Okay, other asset class definitely have their own advantages in different time frames and different requirement, right? Say अभी कोई retired person है already,
वी आर टॉकिंग अबाउट यू नाउ. ओके, आप लोगों के हिसाब से हम बात करें तो द बेस्ट एसेट क्लास इज इक्विटी बिकॉज टाइम इज इन आवर हैंड. अभी हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा है, हमारे रिटायरमेंट को भी बहुत टाइम है, तो हमें तो फास्ट मूविंग व्हीकल ही चाहिए. से कोई ऑलरेडी रिटायर्ड पर्सन है, ठीक है. अब क्या प्रॉब्लम है ना, रिटायर्ड पर्सन में क्या होता है, व्हेन यू आर ऑलरेडी रिटायर्ड what happens is you have already earned the money. Now the issue is to safeguard or the protect that money. समझ रहे हैं, रिटायर्ड पर्सन ऑलरेडी बहुत कुछ उसने लाइफ में कमा चुका है. अब उसकी जो कमाई है उसे हमको सिक्योर करना है, उसे हमें सेफगार्ड करना है. वहां पे हम लोग डेट और इक्विटी का मिक्स कर सकते हैं, ठीक है, ताकि उसका पैसा प्रोटेक्ट भी हो सके और इक्विटी के वजह से वो पैसा ग्रो भी कर सके. Right, so there are different techniques involved in this, but basically we need fast moving vehicle. We have a target very not near but very far. Now equity, there can be two types. You can start investing in equity. One is you can start investing using direct equity. अब direct equity में invest कर सकते हैं. For this you should start learning about equity markets. आपको समझना चाहिए कब कौन से शेयर्स को आपको परचेस करना है. यू शुड लर्न फंडामेंटल एनालिसिस. यू शुड आल्सो नो अ लिटिल बिट, एटलीस्ट अ लिटिल बिट अबाउट टेक्निकल एनालिसिस, एंड देन यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन डायरेक्ट इक्विटी. अनदर ऑप्शन इज you can invest using equity mutual funds. Now what are mutual funds? Mutual funds में भी क्या होता है ना, equity mutual funds में at the end your money is invested in equities only, but it is invested by a fund manager who is expert in it, who is, we assume that he is expert in it, and of course he is expert, right? He is qualified person, he is expert in it, and what he will do, उसका काम क्या होता है ना, the job of him is to make your money invest in such a way that it can create long time wealth for you in future. यही उसका काम होता है. डायरेक्ट इक्विटी में रिस्क है, आपको रिस्क क्या है कि you should select the proper company, ये सब आपको खुद को select करना है properly and then you can invest, right? इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप क्या कर रहे हो ना, अपना जो रिस्क है वो आप किसी और पे डाल रहे हो. You are just transferring your risk to a fund manager. Now the risk is of fund manager कि उसको आप proper stock ढूंढना है, उसको प्रॉपर स्टॉक पे इन्वेस्ट करना है, हमारे लिए वो इन्वेस्ट करेगा. यू हैव अपॉइंटेड अ प्रोफेशनल. बेसिकली व्हाट यू डू इज इन म्यूचुअल फंड्स यू अपॉइंट अ to invest your money on your behalf, and in direct equity you yourself invest. Okay, this is the difference. You can go by any route whichever you feel okay with, but start investing in equity if you have time in hand, right? Now this is just a life cycle of a any person. Okay, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है. You have a newborn baby, then you become young, and then you retire, say at the age of 60 years. So if we consider, say डायरेक्ट इक्विटी में आपने इन्वेस्ट किया, वेल एंड गुड. अगर आपको इक्विटी का नॉलेज नहीं है, आप किसी और फील्ड से है और आप यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना चाहते, आप चाहते हैं कि आप आपके प्रोफेशन पे, आपके बिजनेस पे ध्यान दें, और you want to create wealth, or you want to say create a retirement corpus. अभी किसी को से बेबी हुआ है, he is just born, okay, so can anyone normal आज की इंडियन मिडिल क्लास फैमिली 500 रुपए महीना तो कर ही सकती है ना इन्वेस्ट, या नहीं कर सकती? What do you feel? Can you all can invest 500 a month? Yes, that's sure. Yeah, not a very big amount I'm talking about, just 500 a month. Okay, so say you start investing 500 rupees per month when this kid was born. Okay, just 500 rupees, and you want to create a corpus for his retirement. Okay, ये बच्चे के रिटायरमेंट के लिए हमको corpus create करना है, ठीक है? If you earn at 12% per annum, ठीक है, आप सोचिए ऐसा कि आप 12% हर महीना या हर साल, your CAGR is 12%. That is compounded annual growth rate. You can read about it in Google भी, आप जाके देख सकते हैं what is CAGR. आपका एनुअल ग्रोथ रेट जो कंपाउंडेड होते जाता है. कंपाउंडिंग मीन्स हम देखते हैं आगे 1-2 मिनट में. कंपाउंडिंग वेरी सिंपल कंसेप्ट. सो 12% से जस्ट एक वाइल्ड गेस कर सकते हैं आप कितना पैसा हो सकता है. हम टोटल कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं एक साल में? 500 रुपए.
that is yearly 6,000 rupees for 60 years. Now we have just invested 3,60,000 rupees. That's it. In the whole lifetime, we have just invested 3,60,000 rupees. So at 12% CAGR, आप please don't do Google वगैरह कुछ नहीं करो. Just give me a guess. कितना हो सकता है amount? Sir, 50 lakh. 50 lakh. Okay, very good. और कोई? More than 2 crore. More than 2 crore. Okay. और कोई है? Sir, around 20 lakhs. 20 lakhs? Yes, around 20 lakhs. 20 lakhs. Okay. It's 6.5 crores. Okay. So if the return is only 12% a year, that is the CAGR is 12%, the corpus created by just investing 500 per month for 60 years is 6.5 crores. This, anyone can do it. Now if this return is 15%, अब कितना होगा? Just थोड़ा सा रिटर्न बढ़ा दिया मैंने 2-3%. Sir, 10 हो जाएगा. 10 करोड़ हो जाएगा. ओके. और कोई? गूगल नहीं करना. देखो गूगल करेंगे तो मजा नहीं आएगा ना. आप डिसाइड करो क्या हो सकता है. जस्ट guess it. 8 crore. Around 8 crore. 8 crore, 9 crore, 10 crore. Okay. It's 31.303 crores. If your return is कैसे? CAGR is 15%, you can calculate it. It's very simple. Just keep on adding 15% at the compounded annual growth rate. I'll show you the CAGR calculator also. It's available online on any platform where mutual funds are sold. You can just check it out. Say 18% अगर होता है, the CAGR is 18%. मैंने जैसे आपको बताया कि सेंसेक्स का CAGR is 15.32%, राइट? तो इसके हिसाब से हम एवरेज भी अर्न करने जाएंगे ना 500 रुपीज हर महीना इन्वेस्ट करके, तो यू कुड हैव क्रिएटेड 31 crores एट द एज ऑफ 60. से 18% और 2-3% बढ़ा दिया तो कितना होगा? 50 crore. 50 crores. ओके. और कोई? एनी वन ऑफ माय फ्रेंड? कोई और? इट वाज अ गुड आंसर. और कोई है? गेस करना यार, इतना टाइम लगा रहे हो आप लोग. गूगल नहीं करना, गेस करना है बस अपने. Sir, 80 crore. 80 crores. Okay. See, it's 153 crores. Just by investing 500 a month. And if this is 20%, now guess. Sir, 200. 200, okay. It's around 250 450 crores. Just if you want 2% more. Now, how this happens? This is the power of compounding. Okay. What I'm talking about is compounding returns. When you invest 500 per month every year, हर महीना आप 500 रुपए इन्वेस्ट करते जा रहे हो, तो क्या होता है ना, you get compounding returns. Means आपको आपके न्यू इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलता है, प्लस आपको ओल्ड इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलता है, प्लस आपके ओल्ड इन्वेस्टमेंट ने जो ऑलरेडी रिटर्न अर्न कर लिया है उस रिटर्न पे भी रिटर्न मिलता है. ओके. सो दीज आर कंपाउंडिंग रिटर्न्स. तो यहाँ पे क्या होगा ना, 18% जब आप अर्न करते हो तो आपका 3,60,153 करोड़ हो सकता है. और ये 153 करोड़ जब इसमें 20% ऐड होता है ना, तो ये जो 2% ऐड हुआ, ये 153 करोड़ पे भी मिलेगा ना आपको रिटर्न. सो इट इज रिटर्न ऑन रिटर्न plus return on your new investment plus return on your old investment, and everything combined you can generate a huge corpus, and this is how the wealth is created. But for creating wealth, as I said, there is no shortcut. आपको बहुत सारा पेशेंस चाहिए उसके लिए. आपको इतना टाइम कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करना है. ओके. मैं आपको कुछ लिंक बता दूंगा जहां से आप आपके लिए कैलकुलेट कर सकते हो कि आप खुद अगर 500 या यू कैन इंक्रीज द अमाउंट. मैं तो एकदम बेसिक बता रहा हूँ, 500 रुपए महीना. यू कैन इंक्रीज एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर कैपेसिटी. यू कैन इंक्रीज टू 1,000 रुपीज, 5,000 रुपीज पर मंथ, 10,000 रुपीज पर मंथ. यू कैन गो अप टू 1 लाख रुपीज पर मंथ. इट्स ऑल अप टू यू. बट जस्ट आप इसको कैसे चेक करोगे मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ.
So this is very important to create wealth. Okay. So the best thing is to start investing. आप जितने कम एज में स्टार्ट करेंगे उतना ज्यादा आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है, उतने बार आपका पैसा कंपाउंड होता है और उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलता है. नाउ दिस इज अनरियलिस्टिक थिंग. ओके, मेरे स्क्रीन पे जो है ये बहुत अनरियलिस्टिक है. मैंने भी जब इसे फर्स्ट टाइम कैलकुलेट किया तो मुझे भी ये एकदम ऐसा मतलब लगा कि कुछ चमत्कारी अलादीन का चिराग मुझे मिल गया है. लेकिन फॉर दिस you have to consistent and you have to invest each and every month consistently, right? Then this is easily achievable. आप बहुत सारे, this is simple है, डायरेक्ट इक्विटी भी नहीं बोल रहा हूँ मैं कि आपको बहुत मेहनत करना है. आपको एक अच्छा सा म्यूचुअल फंड अगर चूज कर लेंगे तो म्यूचुअल फंड में भी अभी तक 15 to 18% रिटर्न देने वाले बहुत सारे म्यूचुअल फंड है. मतलब देर आर वेरियस, you can get hundreds of funds that have generated 15 to 18% return in long term. मतलब अभी जिनको 15 साल हो गए जिस फंड को, या जो म्यूचुअल फंड को से 20 साल हो गए, उन्होंने 20 साल में अभी तक CAGR 18% दिया है. Now what do you mean by CAGR? पहले मैं आपको बता दूं. देखिए ये इक्विटी है, तो इक्विटी में ऐसा नहीं होगा कि आपको हर साल 15% रिटर्न मिलेगा या हर साल आपको 18% रिटर्न मिलेगा. ओके, क्या होगा, जैसे फर्स्ट ईयर में आपको 10% मिला, सेकंड ईयर में हो सकता है आपको 50% रिटर्न मिल जाए, फिर थर्ड ईयर में हो सकता है आपको 10% का लॉस हो जाए, फिर फोर्थ ईयर में आपको हो सकता है 5% मिल जाए, लेकिन ये सबका एवरेज कितना हो जाएगा, 15%. दिस इज कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, जहाँ पे हम हर साल के रिटर्न्स का कंपाउंडिंग रिटर्न्स का एवरेज निकालते हैं. ओके, तो दीज आर द एवरेज रिटर्न्स. ऐसा नहीं है कि कंसिस्टेंटली आपको हर साल 18 मिलेंगे. लाइक यू हैव इन्वेस्टेड 100 रुपीज, इट विल बिकम 118, देन नेक्स्ट ईयर वापस 118 पे 18% आपको मिलेगा. फिक्स रिटर्न नहीं होते ना, एक बिजनेस है. इक्विटी क्या है, बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो बिजनेस कंसिस्टेंटली थोड़ी होता है ना. कभी प्रॉफिट कम होता है, कभी प्रॉफिट ज्यादा होता है, कभी लॉस भी हो सकता है. तो क्या होता है उसमें, रिटर्न्स भी आपके कम ज्यादा हो सकते हैं, बट दीज आर दी एवरेज रिटर्न्स. ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरेज रिटर्न. अब आप एवरेज रिटर्न कब कमाएंगे, जब आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करेंगे. अगर आपने अभी आप सोचेंगे कि कोरोना आ गया अभी तो दुनिया खत्म हो जाएगी, वो पिछले साल ऐसा सोचा था लोगों ने, अभी तो कोई नहीं सोचता. आप अगर देखें तो 1979 में सेंसेक्स लिस्ट हुआ था 100 रुपए 100 पॉइंट्स पे. आज वो सेंसेक्स अराउंड 51,000 है. इसके बीच में बहुत कुछ हो गया, हर्षद मेहता का स्कैम हो गया, उसके बाद में और भी कुछ एपिडेमिक्स आए होंगे, पैंडेमिक्स आए होंगे, कोरोना आके भी चला गया वापस, लेकिन अभी भी वो 51,000 पे कर ही रहा है ना ट्रेड, इवन आफ्टर कोरोना इन जस्ट 1 ईयर. उसके बाद में रियल स्टेट का क्राइसिस हो गया, 2008 का मार्केट फॉल हो गया, यूएस में जो क्राइसिस हुआ था वो हो गया. इतना सब झेलने के बाद भी इट इज स्ट्रांगली ट्रेडिंग. ओके, सो इंडिया का फ्यूचर ब्राइट है एज वी ऑल नो. तो हमारा मार्केट पक्का से 100% बढ़ने वाला है, हमारा मार्केट ऐसा रिड्यूसिंग नहीं जाएगा. ओके, so start investing at a very young age. This will give you the benefit of creating a big corpus or a big wealth for you, for your family, for your loved ones. Now इससे बेनिफिट क्या है, हर महीना इन्वेस्ट करने से क्या बेनिफिट होता है. ऐसा भी कोई सोच सकता है ना कि सर मैंने अगर 3,60,000 एक साथ इन्वेस्ट कर दिया आज और 15% से मैं अगर रिटर्न कमाऊं तो मैं ज्यादा कमाऊंगा. काम चल रहे हैं बोल रहे थे 3,60,000 तो आई विल डेफिनेटली अर्न मोर, बट ऐसा नहीं है क्योंकि रेट कम ज्यादा हो सकता है. तो आप अगर यहाँ पे देखें, एक जस्ट सिंपल सा एग्जांपल है. दिस इज द बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग रेगुलरली थ्रू SIP. दैट आई एक्सप्लेन्ड इज SIP, दैट इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. आप सिस्टमैटिकली हर महीना एक फिक्स डेट को एक फिक्स अमाउंट के यूनिट्स परचेस करते हो. ओके, yes, this is the example of rupee cost averaging. This is one of the benefit of SIP which we call as rupee cost averaging. Now what is this rupee cost averaging? Say first month में आपने 1,000 रुपीज का कुछ परचेस किया और NAV was 10 रुपीज, तो आपने कितना यूनिट मिला, आपको 100 यूनिट मिला. और किसी ने एक साथ 4,000 रुपीज का एक लमसम वन टाइम परचेस कर लिया तो उसको मिल गए 400 यूनिट्स. ओके, नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट मंथ क्या हुआ कि थोड़ा सा मार्केट करेक्ट हो गया और अब NAV 8 रुपए हो गया. तो अब क्या होगा, आप इन्वेस्ट तो 1,000 रुपीज ही कर रहे हो, बट अब वो 1,000 रुपीज में यूनिट का रेट हो गया 8 रुपीज. तो नाउ यू विल गेट मोर यूनिट्स, नाउ यू विल गेट 125 यूनिट्स. सेम वे फिर रेट थोड़ा सा बढ़ गया, देन यू गेट 111 यूनिट्स. फिर रेट और बढ़ गया 11 रुपए हो गया, तो आप तो इन्वेस्ट फिक्स अमाउंट कर रहे हो तो यू विल गेट लेस यूनिट्स. तो व्हाट यू जनरेटेड,
टोटल यूनिट्स यू एक्यूमुलेटेड इज 427 यूनिट्स, और जिसने एक साथ पैसा डाला है he has accumulated 400 units. So the value of your investment and his investment would be different, because your cost is average cost is 9.36 per unit and the one time investor cost is 10 rupees per unit. So even if you have very less amount that you can invest, से आपके पास में सिर्फ 500 रुपए या आपके पास सिर्फ 1000 रुपए हर महीना इन्वेस्ट करने के लिए, फिर भी स्टार्ट इन्वेस्टिंग थ्रू SIP मोड, जिससे आप वेल्थ क्रिएट कर सको. ओके, तो व्हाट हैपेंस बाय रुपी कॉस्ट एवरेजिंग? व्हेन द मार्केट राइजेस वी गेट लेस यूनिट्स, बट व्हेन द मार्केट फॉल्स वी गेट मोर यूनिट्स. तो आपका एवरेज बन जाता है. ओके, इन SIP क्या होता है, आपका एवरेज बन जाता है. यहाँ पे आपको मैन्युअली एवरेज करना पड़ेगा. जब मार्केट गिरेगा तो आपको यहाँ पे और यूनिट्स ऐड करने पड़ेंगे, तब एवरेज होगा. यहाँ पे ऑटोमेटिकली एवरेज होता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पे. ओके, पर ये कब होगा? लॉन्ग टर्म में. आप जब इसको लॉन्ग टर्म में करेंगे तभी होगा. एंड देन एट द लास्ट पॉइंट वी कम टू द कंपाउंडिंग रिटर्न. इज द ग्रेट अल्बर्ट आइंस्टाइन, एवरीवन नोस. It's his famous quote that compound interest is the eighth wonder of the world. He who understands it earns it. He who doesn't, he pays it. Okay? जो नहीं समझता वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे कर देता है, और जो समझ में आता है जिसको, वो कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न करता है. जैसे हमने देखा, अभी हमने समझा कि कंपाउंडिंग का बेनिफिट क्या है. सिर्फ 500 रुपीज इन्वेस्ट करके भी हम कितना अच्छा कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेके वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं. राइट? सो ये तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, दिस इज सेड बाय द ग्रेट अल्बर्ट आइंस्टाइन. तो इन्होंने तो सोच के ही बोला होगा. पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक सिंपल सा एग्जांपल है जिससे आप क्विकली समझ जाएंगे कि जल्दी स्टार्ट करने से क्या बेनिफिट है, कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको कैसे मिलता है. दो लोग हैं, एक मिस्टर सक्सेना है और एक मिस्टर गुप्ता है. मिस्टर सक्सेना ने 35 की एज में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया. उन्होंने मंथली 15,000 रुपए इन्वेस्ट करना चालू किया, और वो अप टू द एज ऑफ 60 इन्वेस्ट करते रहे. उन्होंने 25 साल इन्वेस्टमेंट किया. ही इन्वेस्टेड फॉर 25 years. तो इस टोटल इन्वेस्टमेंट केम टू 45 लाख रुपीज. तो रिटायरमेंट कॉर्पस उनका बन गया 4.13. वी हैव अज्यूम्ड से 15% ऑफ CAGR. तो उनका अभी कितना बन गया है रिटायरमेंट अमाउंट? 4.13. वही मिस्टर गुप्ता है जो 25 की एज से इन्वेस्ट कर रहे हैं, 15,000 की जगह पे सिर्फ 5,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं. ओके, ही जस्ट इन्वेस्टेड मोर 35 years तक, क्योंकि उसको 60 एज पे आने के लिए 35 साल बचे हैं. तो ही इन्वेस्टेड फॉर 35 years. So now his total investment is 21 lakh. He invested 45 lakhs. He invested 21 lakhs, half of the amount. His retirement corpus is 4.13 and his retirement corpus is 5.70 crore. Now this is the power of compounding. ये है कंपाउंडिंग का पावर कि कम अमाउंट मंथली इन्वेस्ट करके भी, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट भी कम होके भी, यू कैन अर्न मोर. क्यों? क्योंकि इसने ज्यादा टाइम तक इन्वेस्ट किया ना. ही इन्वेस्टेड फॉर 35 years. तो ही गेन द एडवांटेज ऑफ कंपाउंडिंग. तो इस तरीके से हमको भी कंपाउंडिंग का एडवांटेज लेना है और कम एज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है. ओके, अदर एडवांटेजेस अगर आप SIP करते हैं तो एक तो आपका इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन बनता है कि हमको पता है हर महीना हमें इतना इन्वेस्ट करना है. अगर हम ये डिस्क्रिशनरी बेस पे करें अगर, तो किसी महीना हम इन्वेस्ट करेंगे, किसी महीना हम लोग इन्वेस्ट नहीं भी करेंगे. लेकिन एक SIP से क्या होता है, हमारे अंदर एक इन्वेस्टमेंट का डिसिप्लिन बनता है. सेकंड, इट्स पॉकेट फ्रेंडली. आप आपके हिसाब से 500, 1000, 5000, 10,000 जैसा आपका इनकम है, जैसी आपकी अर्निंग है, उस हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. Thirdly, it helps you to achieve your financial goals. आप आपके हर गोल के लिए एक SIP बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया था, सिंपल सा कोई भी गोल हो सकता है यार, किसी का कोई भी गोल हो सकता है. सभी के गोल सेम होंगे जरूरी नहीं है. मेरा गोल है मेरे को आफ्टर 10 years वर्ल्ड टूर करना है. तो वर्ल्ड टूर के लिए मुझे कितना पैसा लगेगा, तो मैं आज कितने रुपीस की SIP चालू करूँ, ये आप प्लान कर सकते हैं कि आप आज से SIP करेंगे तो 10 साल बाद उतना पैसा हो जाएगा, तो आप वर्ल्ड टूर कर सकते हैं. तो आपका कोई भी फाइनेंशियल गोल हो सकता है, उसके लिए आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं. प्लस यहाँ पे आपका जो इक्विटी का रिस्क है ना, वो रिस्क रिड्यूस हो जाता है. रिड्यूस क्यों हो जाता है? एक तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग की वजह से, और दूसरा आप आपका पोर्टफोलियो एक फंड मैनेजर को दे देते हो हैंडल करने के लिए. तो फंड मैनेजर उसमें एक्सपर्ट है, वो दिन भर यही काम कर रहा है ना, इसी काम का उनको सैलरी मिल रहा है उस फंड मैनेजर को. तो ये डज द बेस्ट फॉर यू. प्लस आपको हर
बार आपका जो कॉस्ट है वो एवरेज होता है। मार्केट गिरता है तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं, मार्केट बढ़ता है तो आपको कम यूनिट्स मिलते हैं, तो ओवरऑल आपकी कॉस्ट एवरेज होते जाती है और आप काफी अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। ओके, सो मिस्टर बॉब पार्सन सेज, बॉब पार्सन ये वो है जिन्होंने गो डैडी वेबसाइट है, उनके फाउंडर है। ही सेज नेवर स्टॉप इन्वेस्टिंग, नेवर स्टॉप इम्प्रूविंग, नेवर स्टॉप डूइंग समथिंग न्यू। अभी जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको जस्ट कुछ वेबसाइट्स बता देता हूँ जहां से आप लोग ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हो। जस्ट अ सेकेंड, आई विल जस्ट शो यू अ वेबसाइट जिसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। जैसे आपको एसआईपी के रिटर्न्स चेक करना है या कुछ भी करना है, सीएजीआर कैलकुलेट करना है किसी चीज का, वो भी आप कर सकते हैं। किसी भी वेबसाइट पे कर सकते हैं, सिंपली सभी वेबसाइट ऐसे ही वर्क करती है। तो मैं आपको जैसे एक सिंपल सी वेबसाइट बताता हूँ। I'll just share the screen with you all. Share. Okay. Now, are you able to see a screen? SIP calculator दिख रहा है आपको? Yes, sir. Okay. So this is just info line. आप गूगल पे भी सर्च करेंगे, यहाँ पे आप सिर्फ डालेंगे SIP कैलकुलेटर, जितने भी साल का नॉर्मल SIP कैलकुलेटर डाल दो आप, तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएगी जो SIP कैलकुलेटर देती है। ठीक है, देयर आर वेरियस वेबसाइट, कोई भी SIP कैलकुलेटर यू कैन यूज। अब यहाँ पे सिंपल है, आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं वो आपको डालना है। से आप 2000 रुपीज मंथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ओके, तो आपने यहाँ पे 2000 डाल दिया। आफ्टर दैट हाउ लॉन्ग यू वांट टू इन्वेस्ट, से आपके पास में से 30 इयर्स है इन्वेस्ट करने के लिए, तो 30 इयर्स मीन्स 360 मंथ्स, तो आप यहाँ पे मंथ्स डाल देंगे 360 मंथ। एक्सपेक्टेड रिटर्न है आपका 15% है, लॉन्ग टर्म में यू गेन 15%। सो दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट। सी, you invest 7,20,000, your wealth gained is 1.33 crores and you will have 1.4 crores as the expected amount. Okay, तो कंपाउंडिंग का बेनिफिट यही है कि आप जितना जल्दी स्टार्ट करो और जितने ज्यादा देर के लिए इन्वेस्ट करो। ये मेरा 5, ओके, ये 480 से ज्यादा यहाँ पे मंथ अभी ले नहीं रहा है, तो यू कैन टेक इट 480 मंथ्स में इट्स 1.57 crores. So this is how you can go with it. आपको किसी एसेट क्लास का CAGR कैलकुलेट करना है तो ये ET मनी का कैलकुलेटर है, CAGR कैलकुलेटर, ये आप यूज कर सकते हैं। से सेंसेक्स वॉज 1979 में 100 था, अभी 51,000 है, तो से 42 इयर्स में कितना बना CAGR, तो यू कैन चेक इट, इट्स अराउंड 16%। तो ऐसे आप यहाँ से CAGR भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दीज आर द वेबसाइट्स अवेलेबल, रेडीमेड कैलकुलेटर्स अवेलेबल दैट यू कैन यूज and check the value of your investment, check the growth of your investments. Okay, so this is how you can go for it. After that, so I'll just want to thank you all for patiently hearing and participating in the discussion. So this is why I insist on investments. It is a necessity and not a luxury. आप एकदम मिनिमम अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं and you can create a wealth for yourself in your future for your retirement corpus. Okay. So I would once again like to thank Cerebro Kids for giving me this opportunity and also thank this beautiful audience. Thank you so much, sir. I am sure all of us have truly benefited with the useful insights. It was a fantastic webinar, and I would like to mention special thanks to all the participants. A feedback form link has been shared in the chat box. Do fill it to get the certificate for the webinar. Thank you all. Thank you, sir. Sir, I would like to ask a question. First of all, thank you very much for this beautiful
webinar. Yes, Sorry for the voice. Priyansh. Sorry for the voice. Can you please break. send again feedback link? Yes, So, Priyansh. so my question is that nowadays we hear a lot about the investing options, and as youth, like we are attending a lot of webinar, but we're not clear about like how what is the correct and authentic platform for us to invest in these. Like, where should we go and invest? What is the correct place to invest in all these equity and stock market? Okay. Uh, See, yes. See, very good question it is, and very important one too. See, for investing in direct, say, firstly, I'll talk about mutual funds. Uh, for mutual funds, they you can invest. See, you can invest through CAMS and Carvi. There are only two categories of investment. One is done through CAMS and one is done through Carvi. There are these two companies. So आप कैम्स में इन्वेस्ट कर सकते कैम्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं कार्वी के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं प्लस जो म्यूचुअल फंड का एएमसी होता है एएमसी इज एसेट मैनेजमेंट कंपनी से यू वांट टू इन्वेस्ट इन अ फंड ऑफ से एचडीएफसी म्यूचुअल फंड तो आप एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के वेबसाइट पे जाके या एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के ऑफिस में जाके यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन एचडीएफसी फंड्स. Okay, similarly for any mutual fund, say Tata mutual fund, UTI mutual fund, so you can start through that route. Second, if you do not Sir, your voice is not audible. I think there's some internet issue. He will be joining us shortly. All right, thank you so much. hello, can you hear me, guys? It was disconnected actually by mistake. Yes, Yes, sir. sir. Okay, I'm so sorry. Yeah, there was some network issue. I again rejoined it. हाँ, so Priyansh, I was telling कि म्यूचुअल फंड अगर इन्वेस्ट करना है तो म्यूचुअल फंड देखिए आपके पास में एक ऐप है माई कैम्प्स. उस ऐप के थ्रू आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं. कार्वी के म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. प्लस थ्रू इफ यू आर वांट टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स यू कैन इन्वेस्ट थ्रू डिफरेंट एएमसीज. जैसे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आपके पास में डायरेक्टली आप एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के ऑफिस में जाके या उनके वेबसाइट पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हो. अब आपको अगर म्यूचुअल फंड चूज करने में प्रॉब्लम है बिकॉज देयर आर थाउजेंड्स ऑफ फंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड्स. तो आपको अगर म्यूचुअल फंड चूज करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप किसी एडवाइजर का हेल्प ले सकते हो. और बेसिकली यानी दिस इज नॉट जस्ट द राइट प्लेटफॉर्म बट मेरा एक यूट्यूब चैनल है उस पर मैंने म्यूचुअल फंड्स के बारे में बहुत कुछ एक्सप्लेन किया है कितने टाइप्स के फंड होते हैं और कौन से फंड में कब इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्वेस्ट करते टाइम क्या क्या आपने देखना चाहिए. तो आप वो चेक कर सकते हैं इन केस यू रिक्वायर एनी हेल्प आउट ऑफ इट, तो वो देख सकते हैं. अब अगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो देखिए स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए थ्रू ब्रोकर्स ही हमको इन्वेस्ट करके यू हैव टू इन्वेस्ट थ्रू स्टॉक ब्रोकर्स ओनली. आप डायरेक्टली इन्वेस्ट तो कर ही नहीं सकते किसी भी स्टॉक में, राइट. तो यू हैव टू इन्वेस्ट थ्रू ब्रोकर. तो आप कोई भी एक अच्छा सा ब्रोकर देख सकते हैं. देयर आर वेरियस ब्रोकर्स. आपको अगर फुल सर्विस ब्रोकर्स चाहिए तो देयर आर फुल सर्विस ब्रोकर्स लाइक मोतीलाल ओसवाल, एंजल ब्रोकिंग, ऑल आर गुड प्लेटफॉर्म्स.
प्लस अगर आपको फुल सर्विस ब्रोकर में नहीं जाना है बिकॉज उनका ब्रोकरेज बहुत ज्यादा होता है, वो लोग स्टॉक रिकमेंडेशंस देते हैं बट उनका ब्रोकरेज ज्यादा होता है। तो इफ यू आर यूर सेल्फ रिसर्चिंग एंड ऑल, आप खुद रिसर्च कर लेते हो और आप खुद देख लेते हो कि आपको कौन सा स्टॉक अच्छा लगता है वगैरह, आपको अगर चाहिए, देन व्हाट यू कैन डू इज कि आप डिस्काउंट ब्रोकिंग में जा सकते हैं। देयर आर फ्यू गुड डिस्काउंट ब्रोकर्स लाइक जीरोधा, अपस्टॉक्स, आप वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और उनके थ्रू आप इवन म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए एनजे इंडिया का भी प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, आई पर्सनली यूज इट। ओके, तो म्यूचुअल फंड्स के लिए एनजे इंडिया करके प्लेटफॉर्म है, वो भी बहुत अच्छा है और म्यूचुअल फंड्स के लिए आई फाउंड इट द बेस्ट। स्टॉक्स के लिए डिस्काउंट ब्रोकिंग आप यूज कर सकते हैं और अगर आपको स्टॉक खुद नहीं समझता है और आप टिप बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं या रिकमेंडेशन बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं तो आप फुल सर्विस ब्रोकर जैसे मोतीलाल ओसवाल है, एलकेपी सिक्योरिटीज है, एंजल ब्रोकिंग है, ऐसे फुल सर्विस ब्रोकर के साथ भी आप जा सकते हैं। प्लस बाकी जो मैंने आपको बताया जैसे जीरोधा वगैरह है, तो वहां पे आप म्यूचुअल फंड्स प्लस स्टॉक दोनों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इसमें किसी किसी को डर लगता है कि सर वो हमारा ब्रोकर भाग गया तो हमारे शेयर्स का क्या होगा, मतलब दिस इज द क्वेश्चन आई हैव फेस्ड अ लॉट कि सर हमने से फॉर एग्जांपल जीरोधा में अकाउंट खोला और फिर से जीरोधा ही बंद हो गया तो क्या होगा। तो सी वंस यू परचेज द शेयर, वो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। डीमैट अकाउंट सेबी रेगुलेटेड होता है, प्लस सिर्फ दो ही कंपनीज है जहां पे डीमैट अकाउंट ओपन होता है, एक है सीडीएसएल और एक है एनएसडीएल। ठीक है, देयर आर ओनली टू कंपनीज वेयर यू कैन ओपन द डीमैट अकाउंट, इट्स सीडीएसएल और एनएसडीएल। अदर देन दैट देयर इज नो थर्ड कंपनी। ओके, ये दो ही है जो गवर्नमेंट ऑथोराइज है और जहाँ पे मतलब आप अगर जीरोधा में अकाउंट खोलते हैं तो भी आपका डीमैट अकाउंट सीडीएसएल में खुलेगा, आप अपस्टॉक्स यूज करते हैं तो भी आपका अकाउंट सीडीएसएल में खुल रहा है, आप एनजे इंडिया यूज करते हैं तो भी आपका अकाउंट सीडीएसएल में खुल रहा है, मोतीलाल ओसवाल यूज कर रहे हैं तो शायद आपका एनएसडीएल में खुल रहा है। तो ये दो ही जगह आपका खुलता है। तो एक बार आपने सिक्योरिटीज परचेस कर ली, से आपने आज कुछ शेयर्स परचेस किए, उसका डिलीवरी 2 दिन बाद मिलता है आपको। द टर्न अराउंड टाइम इज T + 2 days, मतलब 2 days the transaction day, after 2 days you get the securities in your demat account. Now once the security is credited to your demat account, तो वो CDSL में आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। फिर जीरोधा विल जस्ट एक्ट एज अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, मतलब वो सिक्योरिटीज को सेल करने के लिए या बाय करने के लिए जीरोधा यूज होता है। जीरोधा में हमारा कोई शेयर नहीं होता, हमारा शेयर्स जो हम परचेस करते हैं वो डीमैट अकाउंट में होता है। तो जीरोधा इन केस बंद भी हो गया तो आपके शेयर होल्डिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप नए ब्रोकर के साथ वो जो पुराना डीमैट अकाउंट में जितने भी आपके शेयर्स है वो नए ब्रोकर के डीमैट अकाउंट में आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। तो एक बार अगर डिलीवरी हो गई तो देयर इज नो रिस्क, तो आप किसी भी ब्रोकर के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि सभी ब्रोकर से भी रजिस्टर्ड अगर है तो ही आप उनको यूज करना है आपको, राइट। तो ये दीज आर फ्यू गुड ब्रोकर्स जिनके साथ आप हमेशा जा सकते हैं, यू कैन ट्रस्ट देम, दैट्स नॉट एन इशू। I hope I have answered the question of Priyansh. Sir, just a question from my side. Yes. Sir, Okay, it is better to go for bank related brokers or discount brokers like ICIC Prudential and all, or discount brokers like Zerodha. With like which one is better Okay, to go see. with? Okay. Now, as I said, see, both are same. Okay, same regulations are followed by both of them. तो रेगुलेशन के एंगल से देयर इज नो डिफरेंस। नाउ द इशू इज ये बैंक के साथ में अटैच्ड है तो लोगों को थोड़ा सा ट्रस्ट ज्यादा है, बट इफ यू चेक द स्टैट्स, इंडियाज बिगेस्ट ब्रोकर इज जीरोधा, सबसे ज्यादा डीमैट अकाउंट जीरोधा के पास है आज। अब दोनों में से कौन सा बेनिफिशियल है, तो देखिए आपको दो चीजों का ध्यान देना है। से अगर आप खुद ट्रेड करते हैं ना, लाइक आप खुद इन्वेस्ट करते हैं खुद रिसर्च करके, और आपको आपके ब्रोकर से इसमें कोई हेल्प नहीं चाहिए, लाइक यू डोंट वांट एनी रिकमेंडेशन फ्रॉम योर ब्रोकर, यानी आपको नहीं तो ब्रोकर्स रिकमेंडेशन देते हैं ना कि बाय रिलायंस, इसका रिलायंस का ये टारगेट है, बाय एचडीएफसी बैंक के शेयर का ये टारगेट है, ये स्टॉप लॉस है। तो ऐसे रिकमेंडेशंस की अगर आपको जरूरत नहीं है एंड यू कैन इन्वेस्ट योरसेल्फ, या तो फिर आप क्या कर सकते हैं, यू कैन इजीली गो विद डिस्काउंट ब्रोकर, देयर इज नो हार्म इन गोइंग थ्रू देम, यू कैन सेव लॉट ऑफ अमाउंट इन ब्रोकरेज। आप ब्रोकरेजेस में बहुत पैसा सेव कर सकते हैं क्योंकि जैसे वहां पे डिलीवरी ब्रोकरेज 0 है, आप अगर फुल टाइम ब्रोकर्स में जाएंगे तो डिलीवरी में ब्रोकरेज होता है 0.5%, 0.3%, 0.2%, 0.1%, इस रेंज में ब्रोकरेज होता है। तो से इफ यू इन्वेस्ट ₹2 lakhs
तो उसका 0.5% आपको ब्रोकरेज लग जाएगा. यू विल बी चार्ज 1000 रुपीज एज ब्रोकरेज, राइट. लेकिन डिस्काउंट ब्रोकर में आपके वो पैसे सेव हो जाएंगे. बट आपको अगर ब्रोकर का रिकमेंडेशन चाहिए तो फिर डिस्काउंट ब्रोकर्स दे डोंट प्रोवाइड रिकमेंडेशंस, राइट. दे आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग फ्रॉम यू, तो हाउ कैन दे प्रोवाइड एनी रिकमेंडेशंस. सो दे डोंट प्रोवाइड एनी रिकमेंडेशंस टू यू. तो अगर आप खुद से ट्रेड करते हैं तो इट इज वेरी गुड प्लेटफॉर्म. आप जा सकते हैं डिस्काउंट ब्रोकर के साथ, देयर इज नो प्रॉब्लम. मतलब आईसीआईसीआई बैंक का है तो अच्छा है और वो अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, आप कोई भी ब्रोकर सिलेक्ट कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट बेसिकली, राइट. आपका जैसे आपके पास में कोई थर्ड पार्टी एडवाइजर है जो आपको एडवाइस करता है कि आपको ये शेयर खरीदना है, ये शेयर बेचना है, या आप खुद रिसर्च करते हैं, तो यू कैन डेफिनेटली गो विथ डिस्काउंट ब्रोकर्स एंड सेव योर मनी that is outflowing through brokerages. Sir, I have a question. Yes. Sir, Karin, are you satisfied with the answer actually, or you wanted something different to ask? No, sir, no, sir, I am perfectly satisfied. Okay. Yes, Laksh. Sir, if given for SIP, given an option between equity, mutual funds, and the new coming bitcoins, which would you recommend, sir? See, bitcoins and equities are altogether different things, right? Equities, bitcoins, it's a currency basically, right? Yeah, as we all know, it is a cryptocurrency. Everyone knows that. See, first thing, there is no गवर्नमेंट बैकिंग टू इट. ठीक है, आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बिटकॉइन में आप उतना ही इन्वेस्ट करें जितना खोने के बाद आपको दुख ना हो. लाइक पीपल इन अमेरिका इन्वेस्टेड इन यूएसए, दे इन्वेस्टेड देयर होल लाइफ सेविंग्स इन बिटकॉइंस एंड इट सडनली क्रैश्ड. ठीक है, तो उसमें बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि देखिए बिटकॉइन में अंडरलाइन कुछ नहीं है. इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन शेयर्स ऑफ से टाटा मोटर्स, एक जस्ट एन एग्जांपल, ओके, नो रिकमेंडेशन, नथिंग, जस्ट अ डिस्क्लेमर. तो जैसे आपने टाटा मोटर्स के किसी शेयर में इन्वेस्ट कर लिया तो देयर इज बैकिंग. ओके, बैकिंग क्या है? आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो बेसिकली. नाउ व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन अ बिजनेस, तो वहां पे आपको सेफ्टी ज्यादा है. टाटा मोटर्स का बिजनेस कैसा है आपको पता है, टाटा मोटर्स एवर ग्रोइंग है आपको पता है, टाटा मोटर्स में आपको फ्यूचर में प्रॉफिट्स होने वाले हैं कंपनी को, तो आपको इन लॉन्ग टर्म ग्रोथ होने वाली है, यू नो दैट. लेकिन बिटकॉइन में जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, वो गिर भी सकता है, बढ़ भी सकता है, क्योंकि उसको एक तो गवर्नमेंट का बैकिंग नहीं है. आपके साथ बिटकॉइन में कोई फ्रॉड हो जाता है तो आपको देयर इज नो वन टू हेल्प यू आउट, राइट. तो अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए इन्वेस्ट करते हैं, लाइक आप रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट गो फॉर इक्विटी. यू चूज द एसआईपी रूट, और यू कैन गो फॉर डायरेक्ट इक्विटी ऑल्सो. आप डायरेक्टली शेयर्स भी खरीद सकते हैं, या आपको नहीं पता है तो सिंपली एसआईपी कर लो. एसआईपी करना तो अच्छी चीज है, आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हो ना तो भी आपने एसआईपी तो करना ही चाहिए. तो आप एक एसआईपी के थ्रू जाए, वो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा सेफ है. क्रिप्टो करेंसी में आप जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपका पैसा बन गया, यू नो, ट्रेड टाइप में आप जा सकते हैं, बट बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म में फिलहाल तो अगर उसको कोई सपोर्ट नहीं है, कोई बैकिंग नहीं है, तो उससे हम ज्यादा सपोर्ट नहीं कर सकते. हम भी उस पर ज्यादा बिलीव नहीं कर सकते. वो मल्टीफोल्ड रिटर्न्स भी दे सकता है और आपका पूरा पैसा जीरो भी करा सकता है. तो आपने उतना ही इन्वेस्ट करना चाहिए जितना आप खो सकते हैं, राइट. Okay, sir. So, sir, between direct investment and mutual funds, which would you recommend, sir? You should do both. आपने दोनों करना चाहिए. Okay, sir. In case of direct investment, if I'm investing into shares, is it necessary that for the next 30 years or 20 years I should be investing in the same company? No, not necessary. Say if you are a long-term investor and you want to create wealth, what you will do is you will say you invested in XYZ company. Then what you will have to do is you have to review the company every 6 months or a year. आपको हर 6 महीना या 1 साल में every 6 months, every year you have to review the company. You have to review the balance sheets of the company. You have to review the annual report. You have to review the business of the company. क्योंकि आज कोई कंपनी अच्छी है, से यस बैंक थी, so yes bank was a very good bank a few years ago. Okay, shares were trading at say 400 300 rupees like that, and now it fell up to 6 rupees. Okay, so as you know there are multi baggers in stock market. Like multi baggers होते हैं, टाइटन का शेयर
3 रुपए का था, it was costing 3 rupees, now it's in thousands of rupees. Okay, it is more than 1,000. So ऐसे मल्टी बैगर्स है, तो इक्विटी मार्केट में मल्टी बेगर्स भी है. मल्टी बेगर्स आई मीन जो 400 रुपए के थे और अब 5 रुपए के हो गए. You know, they were trading at 400 and now they are 500 और say 5 rupees और 3 rupees ऐसे भी हो चुके हैं. तो जब आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो यू हैव टू रिव्यू योर कंपनी. आपने जिस कंपनीज में या जो से नंबर ऑफ आपने 10 कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, you have to review those 10 companies every year or every 6 months. You have to review कि उनका बिजनेस कैसा है, उनके एनुअल रिपोर्ट्स कैसे हैं, उनका मैनेजमेंट कैसा है. You all have to check. But when you invest through mutual funds, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है. आपने इन्वेस्ट कर दिया है किसी एक पर्टिकुलर फंड में. Now all this job is of that fund manager. Now the fund manager will manage your portfolio. Okay. So I feel you should do both, but SIP is a must क्योंकि हम शेयर्स में इतने दिन इन्वेस्ट नहीं रह सकते. You know, there is a human psychology और human emotions होते हैं जो बीच में आ जाते हैं. तो हम एक शेयर लेके उसको 30 साल होल्ड करें, ऐसा बहुत रेयर होगा unless you have forgotten that you have bought that share. मतलब जो भूल जाता है ना वही रख सकता है इतने दिन शेयर्स. अदर क्या होता है ना, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि उसको हम ज्यादा लॉस हो गया तो बेच देंगे, ज्यादा प्रॉफिट हो गया तो भी बेच देंगे. इतने टाइम हम होल्ड नहीं कर सकते. बट जब हम SIP करते हैं ना तो हर महीने क्या है ना छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट होता है. देयर इज वेरी स्मॉल अमाउंट दैट इज गेटिंग इन्वेस्टेड और हम इन्वेस्ट करके भूल भी जाते हैं. यानी से यू आर अर्निंग 1 लाख रुपीज अ मंथ and you have invested say 5,000, तो you will forget it कि आपका तो खर्चा हो गया. You will forget it like an expense. और actually long term investment SIP के through ही हो सकता है because in trading shares the most important thing is human emotions. You have to control your emotions while trading in direct equity. Okay, so SIP is a must and you can also invest in direct equity subject to you have to review your company every 6 months or a year if you are a long term investor. Thank you, sir. Thanks a lot for explaining. Anybody has any other question? Sir, thank you very much for the previous answer. It was very clear. I have another question that among PFF and SIP, which one is better according to you? Like both are based on compound CAGR, like you told us. Those both are based on PFF means what? PFF is like the Provident Fund. The scheme. Okay, PPF. Okay, Sorry, okay. sorry. It's PPF. Okay, okay, got it. See, there are 3-4 things to consider. If your PPF give fixed returns, right? And as you can, if you check the history, the returns are declining in nature. मतलब PPF एक time पे it was giving say 15% return also, 11% also. Now around it is giving 8%, 7%. So it returns may vary every year, and so has equity, but equity has generated better returns. First thing. Second thing, in PPF you have a lock-in period, right? You cannot remove the required money up to 15 years. You can have part withdrawal after 7 years. Secondly, in PPF, you have the limitation. In any ways, you cannot invest more than 1,50,000 a year in PPF. तो आप 1,50,000 से ज़्यादा तो anyhow PPF में invest कर ही नहीं सकते. PPF का advantage ये है कि the returns you get are tax free. मतलब उसका जो interest मिलता है आपको वो भी tax free है. Plus the amount that you will get at the end of the maturity period, that is also tax free. So that is the advantage of PPF. But as a youngster, I would suggest equity. But if you are a person of say 45 years age or a 50 years age, you can go for PPF for some amount in PPF and some amount in equity. Both are good, but subject to the changes in interest rate, as government is continuously reducing the interest rate, so that is an issue, right? All right, thank you, sir. Thank you so much, sir. I believe that the doubts have been cleared. Okay, thank you so much, guys. Happy Thank you investing once again. to everyone. Thank you, sir. Okay, bye. Have a good day, sir.